Hey guys, hello, how are you? I'm Professor Nilesh Anandwani. I'm welcoming you from my YouTube channel that is Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani, a channel specially for the students of biological sciences, medical sciences, pharmacy sciences, or those who are preparing for NEET CET, NET सेट गेट पेट आईआईटी जेम। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में मतलब नीट में दोनों में पढ़ाया जाता है। आप सीईटी पढ़ो या तो नीट पढ़ो, दोनों में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। हालांकि क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंसेस होता है, तो मैं आज वो डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर introduction of a chapter 5 morphology of flowering plants. Let's start. तो दिस इज वन फ्लावरिंग प्लांट विथ अस। एक फ्लावरिंग प्लांट मैंने यहाँ पे डायग्राम के तौर पे लिया हुआ है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। Generally, all the plants are divided into two main category. One is a cryptogame and second one is a phanerogame. Cryptogames are those category of a plant. Cryptogame are those category of a plant which produces a spore, and phanerogames are those category of a plant which produces a seed. Cryptogames are algae, bryophytes, and pteridophyte, and phanerogames are angiosperm and gymnosperm. But out of this angiosperm and gymnosperm, only flowering plant is angiosperm. यस, जिस प्लांट के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म कैटेगरी होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस दुनिया में अभी तक नियर अबाउट 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास मतलब 0.3 मिलियन के आसपास फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है। इतनी 0.3 मिलियन अराउंड स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड related to the flowering plant. How the flowering plant look like? Generally, flowering plant shows two different systems. You can say the system which is below the ground is a root system, just because there is a root is present, and a system which is above the ground is called shoot system, because there is a shoot or stem, branches, flower, fruits are available. That's why it is called shoot system. Now I am going to tell you in detail. Remember, there are three main branches when we are studying. One is morphology, second one is anatomy, third one is a physiology. What does it mean by morphology? Morphology is nothing but study of external feature of a plant. Study of external feature of a plant is called morphology. What does it mean by anatomy? Anatomy means study of a internal structure of a plant, that how plant parts are made, which cells are involved in making that part, which tissues are involved in making that part. It is called anatomy. It is also called as the internal morphology. Yes. And physiology is nothing but study of a function. Like suppose if I say tell me what is a morphology, anatomy and physiology of flower. So morphology means how flower look, anatomy means how flowers are made, which tissue and which cells are involved in making flower, and physiology means function of flower. तो सिंपल है, मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट बाहर से कैसे दिखता है। अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर बाहर से कैसे दिखता है वो हो गया उसका मॉर्फोलॉजी। फ्लावर कौन से टिश्यू से, कौन से सेल से बना हुआ है, ये हो गया उसका एनाटॉमी। और फ्लावर के जनरली फंक्शंस क्या हैं, ये हो गया उसका फिजियोलॉजी। तो ये से तीन ब्रांचेस होते हैं ये चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं रूट और शूट सिस्टम। जनरली एक सीड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूमुल। एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूमुल। तो रेडिकल सीड में से जब ये दोनों पार्ट्स निकलते हैं तो रेडिकल नीचे की तरफ जाता है और वो बन जाता है रूट सिस्टम, और प्लूमुल ऊपर की तरफ जाता है, वो बन जाता है शूट सिस्टम। प्लूमुल ऊपर की तरफ जाता है मतलब plumule when this radical and plumule comes out of a seed, uh, plumule goes upside and make a shoot system or stem, and radical goes downside, that makes a root system or root. Now I'll tell you the part of a plant which is above, sorry, which is below the ground. It is completely called root system.
And in a root system, this one is, as you can see, this one is primary root. Yes, it's a thick one and it's a central one. It's a primary root. And then primary root get divided into the branches. These branches are called secondary root, and all the secondary root produces new branches. As you can see, this one, these are new branches. This one is primary root. These branches are called secondary root, and these branches coming from secondary root is known as a tertiary root, also known as the lateral roots. So these roots, generally primary root remains permanent in the life, but secondary and tertiary root do not remain permanent in their life, just because secondary root basically break down, and after some time they reappear. Now, what is shoot system? Shoot system is a system of a plant in which main stem, you can say main axis, branches, leaf, flowers, which get turned into the fruits, or you can say buds. All these things are available. One more thing about root system is, from the root system all the homogeneous parts are produced. मतलब root में से सब एक जैसे ही parts produce होते हैं. जैसे ये primary root है, secondary root है, tertiary root है, तो ये सब एक जैसे ही part है, इनमें कोई अलग अलग नहीं है. ठीक है. लेकिन ये जो stem होता है, stem में सब different part होते हैं. So stem generally produces a heterogeneous part. Homogeneous part matlab similar part, and stem produces a heterogeneous part, which means different type of part. Like a stem, you can say main axis or middle axis, then there is a branches, then there is a leaf, then there is a flower, then there is a fruit, and different type of buds. तो ये था सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. इस चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉडिफिकेशन of root, structure, function, modification of stem, structure, function, modification of leaf, structure of a flower, parts of a flower, types of a flower, then structure and function and types of a and parts also of a fruit, and then we will discuss about seed, and we will finish this chapter after completing MCQ chapter. Okay guys, so have a good day. If you are new to my channel, please subscribe to our channel and press the bell icon. I'll send you a new link and we will again continue.